Let's first get you updates on the Pune Porsche probe. Multiple attempts, remember, were made to cover up the entire case to save the minor accused. And all the skeletons are now tumbling out of the closet in the Pune Porsche case. In a fresh development, a total cover-up has come to light to exonerate the juvenile. Police have arrested 2 doctors and a medical staffer of Sassoon General Hospital for alleged manipulation of blood samples and destruction of evidence in connection with the Porsche car crash. The medical staff tampered with the blood sample and threw one of the blood samples in the dustbin so it could be swapped with another person's sample. The Maharashtra government has vowed stringent action in the case probe from all angles. Now the government has formed a special committee for the same that will investigate the cover-up and irregularities. The arrested doctors, Dr. Ajay Tavre and Dr. Srihari Halnor, have been sent to police custody till 30th of May. या ठिकाणी जी काही घटना आहे ती अतिशय गंभीर आहे आणि पोलिसांनी योग्य प्रकारे इन्व्हेस्टिगेशन केल्यामुळेच आणि जे काही सीडीआर वगैरे काढले त्यातनं लक्षात आलं की याच्यामध्ये गडबड आहे आणि म्हणून त्याचे धागेदोरे हे मुळापर्यंत जाऊन काढल्यानंतर लक्षात आलं की हा जो काही मुलगा होता जो आरोपित आहे त्याचे जे रक्ताचे नमुने आहेत ते रिप्लेस करून दुसरे नमुने घेण्यात आले होते, परंतु त्याचे दुसरे नमुने पोलिसांजवळ असल्यामुळे लगेच त्याचा पर्दाफाश करण्यात आला. हे जे काही प्रकरण आहे याच्या पूर्ण मुळाशी आणि तळाशी गेल्याशिवाय पोलीस विभाग थांबणार नाही. दिवसापूर्वी एक अपघात प्रकरणामध्ये ससूनच्या 2 डॉक्टरनी रक्ताचे सॅम्पल बदलल्याबद्दल त्यांना अटक करण्यात आली आणि त्याबाबत रवींद्र धंगेकर जे लोकप्रतिनिधी आहेत पुण्याचे त्यांनी माझ्यावर आरोप केले. मुश्रीफांच्या आशीर्वादाने चाललेला आहे असा त्यांनी एक अतिशय खोटा माझ्याबद्दल बदनामी पसरवणारा त्यांनी आरोप केलेला मी प्रसार माध्यमामध्ये पाहिलं. The accused father allegedly called Sassoon Hospital forensic head Dr. Tavre and then exchanged about 15 to 20 WhatsApp calls in a span of 7 hours. Another person, a mortuary attendant named Ghatkamre, was allegedly also roped in. Police have recovered 2.5 lakh rupees from Dr. Srihari Halnor and 50,000 from Atul Ghatkamre. According to Pune Police, DNA in what the Sassoon Hospital showed as the boy's blood sample did not match his father's DNA, whereas the DNA in another sample, the second one that was taken later from the boy, matched, revealing the manipulation of evidence. Now, the police have slapped Indian Penal Code sections 201, which is for destruction of evidence, 120B, which is criminal conspiracy, 467, forgery, 213 and 214, obtaining gifts for destruction of evidence on the 3 accused. पुणे कार एक्सीडेंट मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं. कभी समझ में आ रहा है कि ब्लड सैंपल को डॉक्टरों ने कूड़ेदान में फेंक दिया था, दूसरे किसी के ब्लड सैंपल को मैच करा दिया और कहा कि ये अल्कोहली नहीं थे. कभी कोई कह रहा है कि पुलिस स्टेशन में आरोपियों को पिज्जा बर्गर दिया गया खाने के लिए. पहले दिन से ही पुलिस की पूरी भूमिका संदिग्ध है. तो ये कौन लोग हैं? पुलिस पर किसका दबाव था? कोई राजनेता इसमें इन्वॉल्व है क्या? कोई बड़ा बिजनेसमैन इसमें इन्वॉल्व है क्या? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच करनी चाहिए. राज्य सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, गृह मंत्री पूरी तरह फेल हो चुके हैं. Well, in a sting operation, our SIT has uncovered how the party seems to have continued for the juvenile even inside the police's lockup. Right after the murder of 2 people while driving his supercar, it turns out that the juvenile accused was already getting special treatment, being served pizzas and burgers in the lockup. Take a look at this. ये इसमें मेरे को समझ में नहीं कि अचानक से वो बर्गर पिज्जा का एंगल कहाँ से आ गया मीडिया में, सोशल मीडिया में. जैसे आपकी भाई बन रहे कोई किसी ने क्या करा है. एक्चुअली ना वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ना सेक्शन 11 है, उसको एज अ चाइल्ड उसको ट्रीट करते हैं ना, चाइल्ड विद कॉन्फ्लिक्ट लॉ. उसको खाने पीने का ख्याल रखना वो सेक्शन में दिया हुआ है. बराबर. फिर 5 बजे 6 बजे अगर तुम बोलोगे कि मुझे दाल चावल खाना है तो मिलेगा नहीं. और जो हमारा गवर्नमेंट का भत्ता खाना होता है तो वड़ा या पाव होता है, तो गवर्नमेंट का खाना 11 बजे के बाद वो भी मिलेगा नहीं. ऑब्वियसली क्या होता है, हम हमारे काम में बिजी होते हैं, तो तुम आते हो सर मेरा भाई है उसको भूख लगी है उसको कुछ दे दूँ. तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो भी तुम खाना खाते हो ना तो वो टेस्ट हम कर देते हैं. हमको कुछ होता है क्या, बैठ अभी 10 मिनट
उसको कुछ नहीं होता है, उसको भी खिलाते हैं, तू खा 10 मिनट बैठ, फिर उसको देते हैं। तो ये सब गड़बड़ में ना, कि वो बच्चा बोले कि सर मैं खाना दे दूँ, तो इन लोगों ने शायद मुझे कुछ स्टोरी नहीं पता, ये खाली सुनी सुनाई कहानियाँ हैं, तो उन्होंने दे दिया। अभी ये टाइम में मिलेगा क्या, तो पिज़्ज़ा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, ऑनलाइन वही चालू होता है, मंगा दिया उन्होंने। We have Tejashree joining us in the broadcast with more details. Tejashree, right from the start, multiple attempts were made to ensure that the minor was shielded, that he goes scot-free. And now the cop, one of the cops, is admitting that, yes, pizza burgers were served. He is definitely citing Section 11. But it's not just this. Blood samples manipulated, attempt made to abduct the driver, attempt made to, pressurize the eyewitness as well. Everything has been done. It looks like a scene right out of a movie. Certainly, and you see, as the investigation is unfolding, new and shocking revelations are made every day. Yesterday, we saw that Pune Police Commissioner had revealed that how the blood samples were exchanged. In fact, not only exchanged, it was so surprising to know that the actual blood sample of the juvenile accused was thrown into dustbin. And today, in fact, the investigation will be, taking the turn so as to whose blood sample it was that was sent for testing, because remember that there were 2 blood samples taken, one from Sasana Hospital and the other was sent to the another government hospital. But the one that was sent to the Sasana Hospital, that blood sample had 0 traces of the alcohol, because it was not original blood of the juvenile accused, it was somebody else's blood. Now you see the management has been done on different levels. It be the hospitals, it be the policemen, it be the doctors. Everybody was managed by the Agrawal family, right, from top to bottom. All right, Tejashree, thank you very much for getting us the details. We'll keep coming back to you. For the moment, we're